Good morning, fourth class. Today we will revise again our topic use of apostrophe. That means apostrophe S. So, where we have to use apostrophe as, we will see in this video. Now, first of all, I want to tell you that apostrophe is used to express someone's relation, anyone's relation to anyone. Okay, so apostrophe S we are using to show someone's relation. Now, for example, you can see Ram's pen. That means we are talking about a singular. Ram ka pen, Ram's pen. And if we talking about the pen of Ram, so there is a difference in both the statements. And what is the difference in both the statements, students? Ram ka pen, that means Ram's pen. But the pen of Ram, जो पेन है वो राम का है. ओके, सो हेयर राम्स पेन में राम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है किड्स, एंड इंस्टेड ऑफ द पेन ऑफ राम, इसमें पेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द sentences. I hope you will understood. Now here you can see Ram's pen. In this sentence, importance giving to Ram's pen. यहाँ पे राम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. एंड इफ़ वी सी दिस स्टेटमेंट द पेन ऑफ राम, यहाँ पर पेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स. ओके किड्स, नाउ द अनदर एग्जाम्पल, आई नीड राम्स लैपटॉप. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट राम्स लैपटॉप. राम का लैपटॉप मुझे चाहिए. ओके, सो राम का, whenever we are talking about singular things or a single man, for example Ram is a singular, so we have to put apostrophe before S. Okay, and the next sentence, I need the laptop of Ram. Again here is the importance given to laptop, nothing else but laptop. कुछ नहीं, मुझे लैपटॉप चाहिए बस. So now you can see here jeans and trousers. I hope students that you all know that jeans and trousers always be same in singular manner also and in plural manner also. बेटा singular में भी हम यही बोलते हैं that I have one jeans. हम ये नहीं बोलते मेरे पास एक जीन है. No, always we put S with jeans and trousers. Okay, so already when S is there in any word, so we need not to put again the apostrophe S. So in these plural words we do not need to put apostrophe S. Now here you can see another example. If I say girl's pen, लड़की का पेन, so what we have to write? We have to write apostrophe before S because we are talking about girls. हम लड़की का के बारे में बात कर रहे हैं बेटा. In that case we have to put apostrophe before S. But if we are talking about more than one girl, that means लड़कियाँ, so where we have to put S after S. You can see in the statement also GIRLS, girls. लड़कियां एक से ज़्यादा हैं बच्चों, इसीलिए लड़कियों के लिए गर्ल्स नहीं आएगा, लड़की के नहीं आएगा. इंस्टेड ऑफ वी हैव टू पुट एपोस्ट्रोफे आफ्टर S. So in short बेटा,
Whenever we are talking about plural things, we put apostrophe after s. If we are talking about singular things, then we will put apostrophe before s. So I hope that you all have understood this video.